Okay, so in the last class, what we did was that we talked about biological molecules and we discussed the difference between a polymer and a macromolecule and what are monomers, all of that. Then we started off with the first subtopic of this chapter, which is carbohydrates. And we talked about how there are three major categories of carbohydrates, which are monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. We understood that saccharide basically means a sugar, and monosaccharides are basically single sugar molecules. And when two sugar molecules combine together, they form disaccharide through the process of condensation. And what happens in condensation is that when two monosaccharides come together, there is a removal of a small molecule of water and a glycosidic bond is formed. Now, what is a glycosidic bond? Glycosidic bond is basically a covalent bond. Why? Because it is being formed between carbon, oxygen, and carbon. So this is basically the linking group between two different sugar molecules. ठीक है जी? Now we saw the condensation reaction of maltose, that how two alpha glucose combine together and a water molecule is removed and maltose is formed. Then we talked about the formation of sucrose. That sucrose is basically a disaccharide, which is formed when alpha glucose and fructose, these two monosaccharides combine together. Water again is removed, and as a result, sucrose molecule is formed. Okay. Now we talked about cellobiose. Just a second, let me correct the spelling. So we talked about cellobiose. Now, so far sucrose and maltose, both of them were using the alpha glucose monomer. So there were two types or two forms or two structures or two orientations of a glucose molecule, which can be either alpha glucose or a beta glucose. And the only difference between an alpha and a beta glucose is the placement of the hydroxyl group of the carbon number 1 in the ring. So in alpha, the OH is present below, and in the beta glucose molecule, the OH group is present above. That's the sole difference between these two molecules of glucose. Now, in cellobiose, we're using two beta glucose molecule, and what we said was that we need both the OH groups, which will combine together. One of them, one molecule of water will be lost, and then one oxygen atom would be used as the connecting link, as the oxygen of the glycosidic bond. And for that, both of these have to be on the same plane, on the same line. They should be facing each other. Okay? Now, for that, one of the molecules, either this or this, has to flip. It has to undergo a 180-degree rotation, and only then is it possible for cellobiose to form. So let's see. हमारे पास बीटा ग्लूकोज जो होती है, बीटा ग्लूकोज, the hydroxy group, the OH group is basically present above. ठीक है? So now, basically, if you notice over here, the OH is facing upwards, it's above, and the hydrogen is facing downwards. But if you look over here, this carbon number 1, the hydrogen over here is facing upwards. It is placed on the above plane. And this down here is your oxygen. So इससे हमें क्या नजर आ रहा है? Or what we can understand is that this molecule had its OH pointing downwards. Yani initially इसका जो OH था, before this glycosidic bond was formed, the OH was basically pointing downwards. So if the OH of the first carbon is pointing downwards, it is below, then it should be an alpha glucose, right? Why? Because हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज होती है उसमें OH above होता है और alpha glucose में OH below होता है. But we know that cellobiose is basically what? It is a disaccharide when two beta glucose monomers are coming together. Now, this is a beta glucose. ये पूरा जो structure आपका है, ये एक beta glucose monomer है. But the question arises, why is the hydrogen pointing upwards when OH should be pointing upwards just like here? So if you could notice, this entire structure is basically
a rotated structure of this beta glucose monomer. How? यहाँ पर, if you look over here, the CH2OH, the sixth carbon, which is out of the ring, is pointing upwards. Over here, the sixth carbon out of the ring is pointing downwards. Now this oxygen, they're also opposite to one another. Now, the hydrogen and the OH are pointing downwards. Over here, they're pointing upwards. So what we can say is that this beta glucose monomer is actually flipped, or it has been rotated at a 180-degree angle, so that this OH and sorry, so that this OH over here and this OH over here are on the same plane, and therefore our water molecule can be lost, and one connecting link on the same plane is formed to form a glycosidic bond. Is this clear so far? The entire structure, the entire functioning of cellobiose? When two beta glucose monomers are coming together, and because the 1,4 glycosidic bond has to be established, it is not possible to form that bond if both the hydroxyl groups are pointing in different directions. So they have to be on the same plane. So one of the monomers has to flip at a degree of 180, and so that the glycosidic bond can be formed. So this is what we had done previously. Now, let's discuss what are reducing sugars. Now, in chemistry, we've studied that we have reducing agents, we have oxidizing agents. So similarly, reducing sugars are what? Reducing sugars are your reducing agents, which means that those sugar molecules, when they're added to a certain solution, they have the ability to reduce something, and in turn, because they're reducing something, they themselves are getting what? Oxidized. So reducing sugars are called reducing sugars because they can carry out a type of chemical reaction known as reduction. In the process, they themselves are oxidized. So हमारे पास जितने भी monosaccharides हैं, all of our monosaccharides, be it hexoses, pentoses, trioses, all of them are reducing sugars, and some of the disaccharides, they also are reducing sugars. However, it is to be remembered by heart because questions around sucrose often appear in your P1s. So sucrose is not a reducing sugar. It has to be established that sucrose is an exception. It is not a reducing sugar. All monosaccharides and some of the disaccharides are reducing sugars, but sucrose is not a reducing sugar. Sucrose does not have the ability to oxidize itself while reducing something else. Now, how do we identify, or how do we test for the presence of a reducing sugar? For that, we carry out a test known as the Benedict's test. ठीक है? Now, in the Benedict's test, what we do is we have an unknown solution, and we have to confirm whether this solution contains a reducing sugar or not. Now, what are reducing sugars? All of your monosaccharides and majority of your disaccharides except sucrose are your reducing sugars. So now there's the Benedict solution. Now, Benedict solution is basically made up of copper 2 sulfate. यानी कि हमारे पास जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो किससे बनी हुई है, उसमें क्या आयंस या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें कॉपर 2 सल्फेट के मॉलिक्यूल्स यानी कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस के आयंस प्रेजेंट है इन एन अल्कलाइन कंडीशन. एंड वी नो कि जो कॉपर 2 का आयन है वो जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो उसका क्या कलर होता है, उसका ब्लू कलर होता है. So overall, this Benedict solution or this Benedict's reagent is blue in color. Now, if we add a reducing sugar, यानी हमने कोई monosaccharide add किया या हमने क्या कहते हैं कोई ऐसा disaccharide add किया which is a reducing sugar, what would happen? So basically, test carry out कैसे किया जाता है? We take our Benedict's reagent, ठीक है? Over here, I've even written the methodology. So we take a Benedict solution. So about 2 centimeter cube of test solution of Benedict solution is taken, and exactly same amount of the, basically you take 2 centimeter cubes of your reducing sugar solution, 2 centimeter cubes of your Benedict solution, and then you heat it.
ठीक है, you heat it and then you notice that if a reducing sugar is present, then that blue solution now starts to develop brick red precipitate. आपको precipitate नजर आना शुरू हो जाएंगे और उसका जो blue color होगा, that would slowly convert into a red brown color. And why is this happening? So basically हमारे पास Benedict's का जो reagent था, Benedict solution जो थी, उसमें कौन से ions present है? उसमें हमारे पास copper 2 plus के ions present है. And we know that due to copper 2 plus's presence, the solution is blue in color. Now what happens is when you add a reducing sugar to your Benedict solution, that reducing sugar gets oxidized. This is basically getting oxidized. And when it is getting oxidized, it is in turn reducing your copper 2 plus to copper 1 plus. And we know कि reduction में क्या होता है? Our oxidation number decreases in reduction. So from plus 2, we are going to plus 1. Over here we were plus 2, copper 2 plus, और यहाँ पर हमारे पास copper 1 plus पे हमने copper ions को reduce कर दिया. So this is why reducing sugars are called reducing sugars, because they themselves get oxidized in a Benedict solution, and in turn they reduce the copper 2 plus ions to copper 1 plus ions. Is this clear? Any questions about this? Okay, now moving on. Let's understand. अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास simple Benedict solution है, correct? And then what we did was we added a reducing sugar to it. And when you add a reducing sugar to it, what happens is that you would observe brick red precipitate. ये हमारे पास एक clear solution थी, हमें कोई solid form नजर नहीं आ रही थी. But when you add a reducing sugar to it, what happens is that slowly you observe brick red precipitates. And when the solution turns from blue to brick red and you see the precipitates, you can say that a reducing sugar is present. Over here, a reducing sugar is present. Now, we just established that sucrose is a non-reducing sugar. So जब हम sucrose को add करेंगे ना Benedict solution, because sucrose is not a reducing sugar, what happens is that there is no change observed. हमारे पास Benedict solution sucrose की presence में remains the same. Now, if I have to confirm कि मेरे पास अगर कोई non-reducing sugar, for example, sucrose present थी, so how do I confirm that? Because sucrose को तो अगर मैं add कर रही हूँ Benedict's में, so there is no change happening, so I cannot tell whether sucrose is present or not, or whatever saccharide is present, मेरे पास जो भी disaccharide है जो कि non-reducing है, क्योंकि सारे monosaccharides तो हमारे पास reducing sugars हैं, तो वो सारे brick red precipitate दे रहे होंगे हमें. लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा डाइसैकेराइड प्रेजेंट है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि इज माय हाइपोथेसिस correct whether there is a non-reducing sugar or there is not a non-reducing sugar? So what happens is if we have a non-reducing disaccharide, what happens is कि हमें पता है कि डाइसैकेराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं, एंड हाइड्रोलिसिस क्या होता है? It is the opposite of condensation. For example, यहाँ पर हमारे पास water molecule remove हो रहा था और दो separate monosaccharides, दो monomers आपस में combine कर रहे थे और एक water molecule remove हो रहा था, right? Now, if in this disaccharide, in this amalgamation or in this combination, मैं add कर दूं इधर एक water molecule, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूंगी इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, तो मेरा रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ द बेसिकली लिसिस क्या होता है? लिसिस होता है ब्रेक डाउन. हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब हुआ? लिसिस और ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. तो हमारे पास अगर हम एक डाइसैकेराइड में या एक पॉलीमर में वाटर को ऐड कर देंगे तो उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड दे वुड बी ब्रोकन इनटू देयर सिंपलर सब यूनिट्स. तो मेरे पास कोई भी नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड अगर है और मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, which means that I split it into its monosaccharides, तो मेरा जो reducing sugar है वो क्या बन जाएगा? वो मेरा
मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक कर जाएगा, राइट? 2 मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे. नाउ ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स. तो अगर मैं अपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर का हाइड्रोलिसिस कराऊं, और मैं हाइड्रोलिसिस कैसे करूंगी? मैं डाइल्यूट HCl ऐड कर दूंगी. So I will basically add dilute HCl to carry out the hydrolysis. ये मेरे पास हाइड्रोलिसिस का मीडिएटर बन जाएगा. तो मैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड में डाइल्यूट HCl और वाटर को ऐड करूंगी, जिसकी वजह से my डाइसैकेराइड would be broken down into what? Into monosaccharides. और मोनोसैकेराइड सारे जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं. तो ऑब्वियसली जैसे ही मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे उस सोल्यूशन में, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो सोल्यूशन है वो फिर ब्लू से ब्रिक रेड हो जाएगी. But first, what I would have to do, I would have to first carry out the hydrolysis of this non-reducing disaccharide so that the hydrolysis results in the formation or in the breakdown, which would eventually cause monosaccharides to be present inside the solution. क्यों? मेरा जो सुक्रोज होगा उसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. Both of them are reducing sugars. Why? Because they're monosaccharides, and all monosaccharides are what? All monosaccharides are reducing sugars. तो मेरे पास, because जैसे ही मेरे solution में breakdown हुआ, ये दोनों solution में आ गए. Solution में sucrose ने breakdown करके अब sucrose की form में exist नहीं कर रहा होगा, वो अपने monosaccharides अपने separate units की form में exist कर रहा होगा. तो जैसे reducing sugars बन जाएंगे मेरे solution में, there would be a color change observed from blue to brick red. ठीक है? Is this clear about reducing sugars? Any questions? Now, moving on to polymers. So we've completed our monosaccharides, we've completed our disaccharides. Now let's move to polymers. अच्छा जी, अभी तक हमने reducing sugar में कहा था that all monosaccharides are what? They are reducing sugars, and most of the disaccharides except sucrose are reducing sugars. Now, polymers का हमने कोई जिक्र नहीं किया reducing sugars में. Why? Because polymers are not reducing sugars. Moreover, polymers are also considered non-sugars. अब ये तो बहुत अजीब सी बात है. Why? Because हमारे पास जितने भी हम polymers पढ़ेंगे वो हमारे पास monosaccharides या monomers से ही combine होकर बन रहे होंगे. ये दोनों हमारे पास अल्फा ग्लूकोज के polymers हैं और ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है. Now the question is कि वो मोनोसैकेराइड से बन रहा है, वो शुगर मॉलिक्यूल से बन रहा है. So why are polymers called non-sugars? They are called non-sugars because polymers do not taste sweet. उनका sweet taste नहीं होता. और sugar को हम किस तरह से define करते हैं? Anything which tastes sweet. So because हमारे पास polymers are tasteless and because polymers do not taste sweet, we often refer to them as non-sugars. Now, we have established that our polymers are non-reducing sugars. They are not considered reducing sugars. Now, we know polymers कैसे बनते हैं? Polymers are made by joining many monosaccharide molecules by condensation. Monosaccharides हमारे पास in this case क्या होंगे? हमारे monomers होंगे. Now, the thing is that why do we need polymers? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है polymers बनाने की? What's the need of forming polymers? So basically we know हमें sugar क्यों चाहिए, हमें carbohydrates क्यों चाहिए, हमें basically इसलिए चाहिए so that we can respire, हम उसकी oxidation कर सकें, and as a result of that oxidation we form ATP, and ATP is what? ATP is the energy currency of our cell. हमारे पास जब तक वो एनर्जी नहीं होगी हम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते, हम अपने प्रॉपर वाइटल लाइफ फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर सकते. So we require energy in the form of ATP. And where is that ATP coming from? That ATP is coming from glucose or from a monosaccharide. Now, अगर हमारे पास glucose है present है हमारी body में, so what is the point of forming polymers? So let's read it through. Glucose is also a reactive molecule and would interfere with normal cell chemistry. These problems are avoided when glucose is converted by condensation reactions to a storage polysaccharide. Now, हमारे पास बहुत सारी ग्लूकोज है. Let's take the example of plants. हमारे पास जो plants होते हैं, they have the ability to make
glucose. And how are they making glucose? They can carry out a process called photosynthesis in which they use water and they use carbon dioxide to form oxygen and glucose. And that glucose is basically transferred throughout the plant so that they can use it as their food and they can oxidize that food and form ATP. Now the problem is कि हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा होता है दिन में, जिसकी वजह से ग्लूकोज इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है. नाउ ग्लूकोज उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, जितनी यूजेज है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, a person's appetite is of one roti, ठीक है, एक इंसान की appetite है कि वो एक रोटी खाए, ठीक है, but for example a person goes to the mart and they buy 10 rotis. Now that person's appetite is of one single chapati, right? Now what they do is they would eat that one roti and the rest of the 9 rotis they would store it so that वो dinner में खा लें या फिर वो next day खा लें, या वो पूरी week की एक साथ सारी रोटियां या bread ले आए हैं. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड का पूरा क्या कहते हैं लोफ मंगवाती हूँ, उसमें 12 पीसेज हैं, मुझे 12 पीसेज अपने ब्रेड के नहीं खाने नाश्ते में, मुझे खाली 2 पीसेज खाना है, बिकॉज दैट्स माई एपेटाइट, दैट्स माई रिक्वायरमेंट फॉर दैट मोमेंट. So I'll take those 2 bread pieces, I will eat them, and the rest of the 10 I will store for next day, right? उसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज प्लांट्स में बहुत ज्यादा बन रही होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उससे ज्यादा ग्लूकोज बन रही होती है. सो अगर ये ग्लूकोज हम स्टोर नहीं करेंगे तो हमारा हम तो वेस्ट कर रहे हैं उस ग्लूकोज को जो हमने बनाई, राइट? इतनी मेहनत से प्लांट ग्लूकोज को क्रिएट कर रहा है, अब अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वेस्ट तो नहीं कर सकता उसे. So what happens is that glucose is converted into storage polysaccharides. अच्छा, ग्लूकोज को हम डायरेक्टली स्टोर क्यों नहीं करें? अब ग्लूकोज है, हमें उसको किसी और चीज में, किसी पॉलीमर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? और क्वेश्चन तो ये भी रेज हो सकता है कि ग्लूकोज तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल है तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर, इट्स सिंपल, इट्स स्मॉल, इट्स नॉट लार्ज इन साइज, इट्स अ मोनोमर, तो हम उसी को क्यों ना स्टोर कर लें? Why are we converting it into a polymer, into a larger molecule? उसकी वजह ये है कि ग्लूकोज हमारे पास ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है? यानी कि ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेल है, ठीक है, दिस इज माई सेल, ओके. सेल में ऑब्वियसली क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा जो कि उसका फ्लूइड मटेरियल है. फ्लूइड मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? वाटर कंटेंट होगा, करेक्ट? नाउ ग्लूकोज मैंने ऐड कर दी. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ सोल्यूट. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सॉलिड. हमारे पास अगर सोल्यूट अंदर आ जाए सेल के तो क्या होगा? हमारे पास जो सेल की सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी. ग्लूकोज सेल के अंदर आया जिसकी वजह से हमारे पास जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल है वो इंक्रीज कर गई, और जो हमारे वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर गया. व्हाई? बिकॉज मोर सोल्यूट केम इनसाइड. तो अब बैलेंस क्रिएट करने के लिए कि हमारे पास सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना हो और वापस से जो बैलेंस है, जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है ग्लूकोज के अंदर आने की वजह से, वो बैलेंस हम रिस्टोर कर लें. So to restore that balance, what glucose would do, it would pull water inside. वो ऑस्मोसिस कर लेगी. ग्लूकोज जब भी सेल के अंदर जाएगी वो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगी सेल का, जिसकी वजह से टू बैलेंस दैट चेंज वाटर वुड फॉलो द ग्लूकोज एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ग्लूकोज को या ग्लूकोज जैसे जितने भी हमारे पास आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑस्मोटिकली एक्टिव बुलाते हैं. व्हाई? Because when they come into a place, when they come into a cell, they pull water with them. So they're osmotically active. Why? Because their movement causes the movement of water along with them. तो हमारे पास एक तो ग्लूकोज ऐड हो रही है, ग्लूकोज की वजह से सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ वाटर पोटेंशियल भी बढ़ा है. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अपने साथ वाटर को भी अंदर ला रही है. सो नाउ होगा क्या? सेल बर्स्ट कर जाएगा, राइट? सेल वुड बर्स्ट, या सेल अगर प्लांट्स हो तो वो टर्जिड हो जाएगा. वी डू नॉट वांट दैट. वी डू नॉट वांट कि सेल की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल एक्टिविटी है, वो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ होने की वजह से खराब हो या फिर वाटर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से खराब हो. सो वी नीड
some molecule which is inert, which is unreactive, which is osmotically inactive. या एक तो हमारे पास ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो हमें कोई अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि हर वक्त अगर रिएक्शन होता रहेगा तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है. तो एक वी नीड पॉलीमर्स, व्हाई, और वी नीड स्टोरेज पॉलीमर्स, व्हाई, because our glucose is reactive, so we need an unreactive, inert, stable species. Subsequently, ग्लूकोज हमारे पास सॉल्यूबल है, हमें एक इनसॉल्यूबल स्पीशीज चाहिए. क्यों? ताकि हमारे पास वो हमारे पास सिक्योर्ड रहे, वो सेफ रहे, वो पानी में घुल के जाया ना हो जाए. ठीक है. सो वी नीड समथिंग विच इज कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा जगह ना घेरे. क्यों? ताकि हमारा सेल एक्सपैंड ना कर जाए, हमारा सेल बर्स्ट ना कर जाए. सो वी नीड कॉम्पैक्ट स्टोरेज मॉलिक्यूल्स. देन इट शुड बी इनर्ट और अनरिएक्टिव, and it should be an insoluble molecule. और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट हमारे पास जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं या हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं, they have to be what? They have to be osmotically inactive. Why? So that they do not pull water along with them. Clear? ये सारे रीजन समझ आ रहे हैं कि हम क्यों पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की? Is this clear, Hajra? So our polymers are osmotically अनरिएक्टिव. तो हमारे पास जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्टोरेज पॉलीमर्स होते हैं या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो प्लांट्स में हमारे पास वो स्टोरेज मॉलिक्यूल क्या है? वो स्टार्च है. और एनिमल्स में हमारे पास जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो क्या है? वो ग्लाइकोजन है. ना हमारे पास स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर होता है. तो हम अक्सर प्लांट सेल्स का जब अल्ट्रा फोटो माइक्रोग्राफ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे 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 ग्रेन्स से हैं. वो ग्रेन्स किस चीज के होते हैं? वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं. ठीक है. सब्सिक्वेंटली हमारे पास अबंडेंटली मसल सेल में, लिवर सेल्स में बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास मसल और हमारा जो लिवर है वो हमारा एनर्जी स्टोर है. अब होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी को या किसी भी सेल को, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसको ग्लूकोज की नीड हो और उसके पास ग्लूकोज रैपिडली अवेलेबल ना हो, इमीडिएटली अवेलेबल ना हो, तो होता क्या है कि जो हमारे पास ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे पास ग्लाइकोजन हो गया इन एनिमल्स एंड स्टार्च हो गया इन प्लांट्स, दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. यानी ऑब्वियसली इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इट्स अ पॉलीमर. तो उसको हाइड्रोलिसिस हमें करना पड़ेगा ताकि वो अपने मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ जाए, अपने सिंपलर सब यूनिट्स, अपने मोनोमर्स में आ जाए. और फिर हमारे पास स्टार्च जब टूटेगा, बिकॉज स्टार्च इज अ मोनोमर ऑफ इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स, and our glycogen is made up of alpha glucose monomers again. तो हमारे पास ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगी. सो दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी आर हैविंग स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज पॉलीमर्स, जो कि हमारे पास स्टार्च फॉर प्लांट्स हो गए, ग्लाइकोजन फॉर एनिमल्स हो गए. देन वी आल्सो हैव समथिंग नोन एज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज हमारे पास है जी बीटा ग्लूकोज मोनोमर, और इसका थोड़ा सा जो फंक्शन है वो डिफरेंट है किससे? पॉलीमर्स जो हमने अभी पहले दो पढ़े, यानी ग्लाइकोजन से और स्टार्च से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसका रोल है. क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन और स्टार्च का हमने क्या रोल पढ़ा कि ये दोनों हमारे पास स्टोरेज पॉलीमर्स है, ये एनर्जी स्टोर्स, एनर्जी रिजर्व्स की तरह एक्ट कर रहे हैं. Cellulose, on the other hand, serves the purpose of structural support, of mechanical support. And why? Because it's a tensile, highly tensile, mechanically strong molecule. क्यों है वो हम जस्ट इन अ वाइल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बट अभी एक एक करके लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. अच्छा, एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग सो फार? नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टार्च. सो फॉर स्टार्च, हमारे पास स्टार्च सबसे पहले किस चीज का पॉलीमर है या किस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल इसके मोनोमर की तरह एक्ट कर रहा है? So it's basically made up of alpha glucose. And starch basically दो different molecules की amalgamation है. यानी starch में हमारे पास दो different molecules या दो different polymers मिलकर इस polysaccharide को बना रहे होते हैं. यानी क्या? हमारे पास एक जो molecule होता है वो हमारे पास amylose होता है, और एक जो हमारे पास molecule होता है वो हमारे पास होता है amylopectin. Now फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इन जनरल ओवरव्यू लिया, जो कि हमारे पास क्या क्या थे?
starch, glycogen and your cellulose. इन सारों का जो हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शंस। अच्छा, तो हमारे पास जो ये दोनों होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वी स्टडी बोथ ऑफ देम। बट स्टार्च में बेसिकली हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, अमाइलोज भी प्रेजेंट होता है और हमारे पास अमाइलो पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। नाउ both these amylose and amylopectin are made up of what? They are made up of alpha glucose. Okay. Now हमारे पास ये सारे जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं इनका जो फॉर्मूला है इट इज बेसिकली C6H10O5N। नाउ बिफोर आई प्रोसीड आई वांट यू टू सजेस्ट कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे हमने इसको डिराइव किया, ये हमने कैसे कहा कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, बी इट स्टार्च, बी इट ग्लाइकोजन, बी इट सेल्यूलोज, इन सब का जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है वो C6H10O5 ब्रैकेट N क्यों है? व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या रीजन होगा? एनी सजेशंस? ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नाउ हमारे पास मोनोसैकेराइड्स का जो फॉर्मूला होता है सारे मोनोसैकेराइड्स का वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास होता है CH2ON। और यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्च, ग्लाइकोजन ये दोनों किसके हैं, ये दोनों अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। एंड वी नो दैट ग्लूकोज इज अ हेक्सोसिस, यानी कि उसके 6 कार्बन्स होते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला में ग्लूकोज को इनपुट करूँ तो मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 बन रहा है, राइट। सो माय पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, राइट। तो फिर ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है H12O6 था मेरे मोनोसैकेराइड्स, तो ये H12O6 से H10O5 क्यों बन गया? व्हाट्स द रीजन टू दिस? हमारे पास बेसिकली कॉन्डेंसेशन हो गया, राइट। तो जब कॉन्डेंसेशन होती है तो हमारे पास क्या चीज रिमूव, वेरी गुड, वाटर रिमूव हो रहा है। सो बेसिकली इफ यू नोटिस H12O6 और H10O5 में जो फर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है, H2O का आ रहा है, राइट। मैं बेसिकली H12 से H10 पे जा रही हूँ, सो दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन्स आर रिमूव, एंड मैं O6 से O5 पे जा रही हूँ तो मेरा 1 ऑक्सीजन एटम इज रिमूव। अब हमारे पास जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे कैन बी चेन्स ऑफ हंड्रेड्स, 200s, 500s। मेरे पास 500, thousands, 10,000 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पॉलीमर बन जाता है, पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ज्वाइनिंग टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल C6H10O5 और मेरे पास for example 25 monosaccharides came and joined together। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास for example C6H1025 है तो ये सारी चीजें मेरे पास बाय फैक्टर ऑफ 25 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मेरे पास अगर 25 मोनोसैकेराइड्स आकर कंबाइन हो रहे हैं तो मेरे पास जो टोटल कंप्लीट डिस्प्लेड फॉर्मूला या मोलेक्युलर फॉर्मूला होगा इस पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड का वो क्या होगा, 6 times 25 is basically 150। तो C150 ये हमारे पास H हमारे पास हो जाएगा 250 एंड हमारे पास 25 5 is 125, सो O हो जाएगा 125। सो ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्मूला, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली आवर मोलेक्युलर फॉर्मूला। नाउ कैन यू सजेस्ट कि हमारे पास जब 25 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होकर ये चीज बना रहे हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव हो? व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट? Any guesses? If 25 monosaccharides are coming together, हमारे पास water molecules कितने produce होने चाहिए? So basically हम understand करते हैं कि हमने अब तक सीखा क्या है, ठीक है।
And what we've done is so far, we have basically so what are you saying? Let me read your chat. So you are saying H2480. Okay. So basically हम हमारे पास जो वॉट आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास 24 हाइड्रोजन होंगे, राइट? 248 आप कह रहे हो. ओके ओके, लेट्स डू दिस. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे and tell me if you're able to make sense of it, वरना मैं आपको फिर से explain कर दूंगी. Okay, so for example, I had a monosaccharide A. I cannot, let's just write, I had an A monosaccharide, then I had a B monosaccharide. Now when A and B combine together to form AB, how many water molecules are lost? One water molecule is lost, right? So I lost one H2O over here. And then if I talk about this, हमारे पास 3 अगर मोनोसैकेराइड्स हैं और ये कंबाइन हो रहे हैं, मेरा B और C कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ से मेरा एक H2O रिलीज हुआ. So I said if 3 monosaccharides combine to form one polysaccharide, तो मेरे पास इन टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं? मेरे पास 2H2O are lost, correct? Is it clear so far? अभी तक आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जब 3 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हुए टू फॉर्म 1 पॉलीसैकेराइड्स, तो इन टोटल हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज किए. सब्सिक्वेंटली हमने अगर 4 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करके एक पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, तो जब C और D की बॉन्डिंग हुई तो मेरे पास यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ. So अगर मेरे पास 4 monosaccharides are combining together to form 1 polysaccharide, तो मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हुए? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हुए, राइट? सब्सिक्वेंटली अगर 5 हैं और DE की एक बॉन्ड बना, तो यहां से मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ. तो अगर 5 मोनोसैकेराइड्स हैं तो मेरे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो रहे हैं. नाउ ओवर हियर N, जो कि हमारे पास ये N है, यहां पर हमने कहा ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स joining together to form a polysaccharide. ठीक है, तो अगर मेरे पास 25 मोनोसैकेराइड्स हैं, यानी मेरे पास 25 इंडिविजुअल मोनोमर्स हैं, तो मैंने अभी तक ये सीखा था कि मेरे पास जितने मोनोमर्स या जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे, उससे एक नंबर लेस मेरे पास उतने वाटर्स बन रहे हैं. ठीक है, 5 मोनोमर्स थे तो मेरे पास 4 वाटर्स थे. उसी तरह से 6 मोनोमर्स होंगे तो मेरे पास 5 वाटर लूज होंगे. इसलिए क्योंकि मेरे पास 25 मोनोसैकेराइड्स were making one single polysaccharide, so मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए? मेरे पास 24 वाटर मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए. इज इट क्लियर? आपको ये समझ आया? वेरी गुड. सो बेसिकली हमारे पास जनरल फॉर्मूला हमने अंडरस्टैंड किया कि जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल polysaccharides is what? It is C6H10O5. Why? Because ये हमारे पास ये चीज बता रही है कि जब भी 2 मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. हमें नहीं पता कि एक पॉलीसैकेराइड्स में कितने मोनोमर्स या कितने मोनोसैकेराइड्स है, बिकॉज इनफिनाइट हो सकते हैं. They can continue on joining and joining and joining. So we say that n number of monosaccharides would have this general formula, which represents कि मेरे पास एक मोनोसैकेराइड में मेरे पास एक मोनोसैकेराइड में C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है. When these two will combine, they would form something like this. यानी हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा. Now, N is what? N is the number of monosaccharides joining together to form a polysaccharide. And हमारे पास जब भी, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी? ओवरऑल इक्वेशन ऑफ दिस कंडेंसेशन रिएक्शन C6H12O6. ठीक है,
n numbers of C6H12O6, n number of polymers होंगे, monosaccharides होंगे हमारे पास, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं to form one single polymer. ये सारे individual monomers जो हैं वो कंबाइन करके one single polysaccharide बना रहे हैं. और मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने यूज हो रहे हैं? हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जितने मोनोसैकेराइड्स होंगे उससे एक नंबर का water molecules lose हो रहे होंगे. So this would mean my expression would become n-1 H2O. या इसको मैं थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. H2O और ये कितने टाइम्स है? n-1 H2O. So for example, in this case जो हमने अभी ये वाला पढ़ा 25 वाला, how would I express this in an equation? I would say there were 25 glucose monosaccharides or monomers which combine to form C6H10O5. यहाँ पर कितने होंगे? n हमारे पास 25 था and n-1 हमारे पास 24 water molecules. Is this expression clear? Is this concept clear to you? Perfect. So we would keep this up until here and we will continue inshallah in our next class. Okay. Thank you so much.